First of all, the question is, let R be the relation of A equals to, where A is defined by 2, 3, 4, 5, 6. And we are to define a relation R where condition is X is relatively prime to 1. Write R as a set of ordered pairs. First of all, A is 2, 3, 4, 5, and 6. Before defining the relation, we have to define the cross product of two sets. It will be 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Similarly, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. So this is the cross product of two sets. Okay. Now X is relatively prime to Y. It means that we have to find a relation in which this ordered pair and this ordered pair, nothing element in the common. इसमें कुछ भी common नहीं होना चाहिए. It should have nothing common between them. So relation R is, first of all, this ordered pair 2, 2. 2 में 2 common है. ये भी 2 के साथ divisible है, ये भी 2 के साथ divisible है. After that 2, 3. इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब रिलेशन R will consist of the element 2, 3. After that 2, 4. 2 is common between these two. 2, 5. Nothing is common between these two. 2, 6. 2 is common. It is divisible by 2. Both of them are divisible by 2. After that 3, 2. Nothing is common between these two. 3, 3. Again 3 is common. Both of these elements are divisible by 3. After that 3, 4. Nothing is common. 3, 5. Nothing is common. 3, 6. 3 is common between these two. 4, 2. Again 2 is common. 4, 3. Nothing is common. After that 4, 4. 4 is common. 4, 5. Nothing is common. 4, 6. 2 is common between these two. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5, 5. Common 5. 5, 6. Nothing is common. 6, 2. 2 is common. 6, 3. 3 is common. 6, 4. 2 is common. 6, 5. Nothing is common. And 6, 6. 6 is common. It means that the relation R will consist of these elements. In these elements, first element denotes X and second element denotes Y. Okay? And both are relatively prime. Nothing is common between these two elements X and Y. So you can have these types of examples in your final exams as well as MST. You can be given with any set A and some condition may be there and you have to define the relation R according to this condition. Okay? Next is, let R be the relation. Write down next portion. Let R be the relation, capital R with the relation. Let R be the relation on the set X is equals to, on the set X is equals to 0, 1, 2, 3 and so on, of non-negative integers, defined by the equation x square plus y square is equals to 25. Defined by the equation x square plus y square is equals to 25. Write R as the set of
ordered pairs. Write R as the set of ordered pairs. Given that x square plus y square is equals to 25. Okay. So we will start with the element 0. When x is equals to 0, put x is equals to 0 and y equals to 5. We can get 0 square plus 5 square is equals to 25, implies that 0 plus 25 equals to 25, implies that 25 equals to 25. But the first condition is possible here. Again, we can take x is equals to 5 and y equals to 0. When we put x equals to 5, this is 5 the square plus 0 the square is equals to 25, implies that 25 plus 0 equals to 25, implies that 25 equals to 25. Again, left hand side equals to right hand side. After that, see, if we put x is equals to 1, अगर हम x की जगह पे 1 put कर दें, तो x is equals to 1. So what will be there? 1 the square plus y square is equals to 25. Y square is equals to 25 minus 1, that is 24, implies that y is equals to, don't write this, just it is for just your information, plus minus under root of 24. So the value of y will be plus minus under root of 24. But we are given that that our set is the set of integers, positive integers. So we cannot have this term. ठीक है, इसलिए x is equals to 1 नहीं हो सकता है. Similarly, if we take x is equals to 2, substitute the values. This is 2 the square plus y square is equals to 25. It will be y the square is equals to 25 minus 4. It will be y square is equals to 21, implies that y is equals to plus minus under root of 21. Again, this does not satisfy this condition. It is not a positive integer. ठीक है, इसलिए x is equals to 2 भी नहीं हो सकता. After that, x is equals to 3. If we put x is equals to 3, for this x, we will be having 3 the square plus y square is equals to 25, implies that 9 plus y square is equals to 25, implies that y square is equals to 25 minus 9, implies that y square is equals to 16, implies that y is equals to plus minus 4. Now this is an integer, plus 4 and minus 4, but we are having a set of positive integers, so y will not be equals to minus 4, y will be equals to plus 4. For x is equals to 3, y is equals to 4. Similarly, for y is equals to 3, x must be equals to 4. ठीक है, इसके बाद अगर आप बाकी टर्म्स के ऊपर जाओगे तो 25 नहीं बनेगा आगे. So the relation R will be defined as 0, 5, 5, 0, 4, 3 and 3, 4. This is the relation which is satisfying our condition that x square plus y square is equals to 25. ठीक है? A similar question of this type. Let write down next portion. Let S with a relation. Let capital S with a relation on the set. Let S with a relation on the set capital N of positive integers. Capital N of positive integers defined by the equation 3x plus 4y equals to 17. 3x plus 4y equals to 17. Write S as the set of ordered pairs. Write S as the set of ordered pairs. Write S as the set of
ordered pairs. Now given that 3x plus 4y equals to 17, we can write 3x is equals to 17 minus 4y. ठीक है, अब देखो यहाँ पे S is the relation defined on the set capital N of positive integers. तो हमारे पास देखो यहाँ पे if we put y equals to 0, if we put y is equals to 0, it will be 17 minus 4 into 0, that is equals to 17. If we put y equals to 1, it will be 17 minus 4. It will be equals to 13. If we put y equals to 2, this is 4 into 2, that is 17 minus 4 2s are 8. It will be equals to 9. If we put y equals to 3, it will be 4 3s are 12. It will be 5. If we put y equals to 4, it will be 17 minus 16, it will be 1. And if we put y equals to 5, it will be 17 minus 20, it will be minus 3. अब देखो भाई, we are substituting the values of y. Using this value of y, we can find the value of x. ठीक है? But this is our limit. This is our last condition. We can put y equals to 0 to 4. Because if we put y equals to 5, in that case, the value of x will be negative. But we are with the condition that x is the set of positive integers. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग y की वैल्यूज को पुट करके 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लोग फर्दर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो. तो एट द एंड हमें ऑर्डर्ड पेयर उसी का बनाना है जिससे हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकले. अब ये वैल्यूज आप लोगों को मैंने बता दी. दिस इज द वैल्यूज ऑफ y कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 4. ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग बाकी ऑनवर्ड्स वैल्यू पुट करोगे, इफ यू पुट 5 6 7 8 9 10 and so on, you will get all the values of x in the negative form. ठीक है, but our set is of positive integers only, so we can have the value of y up to 4. So using these terms, find the value of x. Put y equals to 0, x will be equals to, find the value of x. Put y equals to 1, find the value of x. Put y equals to 2, find the value of x. Y equals to 3, find the value of x, and y equals to 4, find the value of x. अब देखो यहाँ से x की कौन सी वैल्यू आती है, जो इंटीजर आती है. If you put y equals to 1, x will be equals to 11 by 3. So this is not an integer. 11 by 3 is not an integer. Similarly, if you put y equals to 2, if you put if you put y equals to 1, then x will be equals to 11 by 3. If you put y equals to 0, x will be equals to 17 by 3. This is again not an integer. If you put y equals to 2, x will be equals to 3. If you put y equals to 3, x will be equals to 5 by 3 again, not an integer. If you put y equals to 4, x will be equals to minus 1 by 3. This is again not an integer. ठीक है, तो अब आप लोगों ने यहाँ से ये डिसाइड करना है कि हम लोग कौन सी वैल्यूज को लें कि हमारे पास आंसर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. तो ओनली वैल्यू इज दिस, when x is equals to 3, y equals to 2. So the relation S is having only one value, that is 3 2. ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 2 है, it will remain 3 2 only. We cannot write 2 3, क्योंकि जब हम लोग 5 को 3 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 5 by 3 आ रही है यहाँ पे. सो इस तरह से आपके पास कोई भी रिलेशनशिप आ सकता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों को वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स वाला सेट लेना है जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे. Write down one more question. Now you will do it yourself. Let R be the relation on the set. Let R be the relation on the set
capital N of positive integers, let R be the relation on the set capital N of positive integers defined by the equation x square plus 2y equals to 100. X square plus 2y equals to 100. Find the domain and range of R. Find the domain and range of R. Okay. So for finding this, first of all, you can write 2y is equals to 100 minus x square. अब यहाँ पे देख लो x की हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं. x can be, if you put x is equals to 10. देखो यहाँ पे the set of positive integers है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप देख लो सबसे पहले कि x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है. सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, हमारे पास नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप लोगों के पास ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको आप लोग रिलेशन के अंदर लिखोगे. और जो रिलेशन बनेगा, कल मैंने आप लोगों को रिलेशन की डोमेन एंड रेंज निकालनी सिखाई थी. डोमेन क्या होती है? द फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर. और रेंज हमारे पास क्या होती है? सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर्ड पेयर. तो वहां से आपके पास डोमेन और रेंज निकल आएगी. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. If capital A is a set, capital A is a set containing n elements, find the number of relations, from A to A. Find the number of relations from A to A. Write down the solution. We know that, I'm again repeating the question, beta. If A is the set containing n elements, find the number of relations. Find the number of relations from A to A. Solution is, we know that if a set capital A has m elements, if a set capital A has m elements and the set B has n elements, then total number of relations, from A to B is 2 raised to the power mn. The total number of relations from A to B is 2 raised to the power mn. Next line we likho, therefore the total number of relations from A to A, the total number of relations from A to A is 2 raised to the power n cross n, 2 raised to the power n cross n, or it is 2 raised to the power n square. Very, very important question for you can say examination point of view.
आर्टिकल है आगे, prove that the relation R, prove that the relation R on set A, prove that the relation R on set A is symmetric if and only if is symmetric if and only if R is equals to R inverse. If and only if R is equals to R inverse. I told you last time that if and only if means both ways implies. If this condition is given, we can write down this term. If this condition is given, we can write down this term. Okay? Now we want to prove this article. To prove this article, how we can prove this? First of all, write down the proof. Write down the proof. Let R is symmetric. Let R is symmetric on set A. Let R is symmetric on set A. To prove, first of all, we are considering this statement and we will prove this relationship. Conversely, we will consider this relationship and we will prove this statement. ठीक है? If and only if का मतलब ये होता है कि पहली कंडीशन को assume करो, दूसरी को prove करो, after that दूसरी को consider करो और first को prove करो. So first of all, we are considering that R is symmetric. Write down next line. To prove R is equals to R inverse. That is, to prove R is a subset of R inverse and R inverse is a subset of R. To prove the equality, what we will prove that left hand side is a subset of right hand side and right hand side is a subset of left hand side. तो हमें ये prove करना है. आप लोगों को बताया था मैंने, if we want to prove that R is a subset of R inverse, take some element in R and prove that that element belongs to R inverse. Now this is a relation. It means that elements in the relation will be of ordered pair type. So let ordered pair XY belongs to relation R. हमें prove क्या करना है? हम लोगों ने रिलेशन में कौन सा एलिमेंट लिया है XY. हमें प्रूव करना है कि जो ये वाला एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है? R इनवर्स को. हमें ये प्रूव करना है. Implies that ordered pair YX belongs to R also. क्यों आएगा ये? क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है because R is symmetric. अगर आप लोगों ने डेफिनेशंस लास्ट टाइम अच्छे तरीके से पढ़ी हैं तो उसमें हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी सिमेट्रिक रिलेशन. So what was the definition of symmetric relation? Symmetric relation says that if some ordered pair XY belongs to relation R, then ordered pair YX will also belongs to relation R. This is the definition of symmetric relation. So we have used this definition over here. ठीक है? तो अगर ordered pair YX relation R के अंदर implies that ordered pair XY belongs to R inverse by the definition of inverse relation. This is equation number 1. This is equation number 2. I'm again repeating. We have to prove R is a subset of R inverse. We have taken one element in the relation R and we have proved that this element belongs to R inverse. लेकिन इसको prove करने के लिए हम लोगों ने कुछ properties use की हैं. What that properties are? First of all, ordered pair XY belongs to relation R. Since R is symmetric, if the relation is symmetric, then ordered pair YX also belongs to relation R. Now we want to prove that ordered pair XY belongs to R inverse. For this, we have used the definition of inverse relation. So by definition of inverse relation, if ordered pair YX belongs to R, then ordered pair XY belongs to R inverse. From 1 and 2, ordered pair is in R, but we have proved this in R inverse. We get that R is a subset of R inverse. Now,
We want to prove that R inverse is a subset of R. For this, take some element in R inverse. Let ordered pair XY belongs to R inverse. But we want to prove that this ordered pair belongs to relation R. तो उसके लिए क्या करेंगे? Implies that अब XY R inverse में है, लेकिन हमें सिमेट्रिक क्या दिया? R is symmetric. तो यहाँ पे तो हम डायरेक्ट सिमेट्री की डेफिनेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे, पहले हमें इस R इनवर्स को R में चेंज करना है. तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर XY belongs to R by the definition of inverse relation. अब हमें यहाँ पे रिलेशन R जो है वो क्या गिवन है? सिमेट्रिक गिवन है. तो अगर ऑर्डर्ड पेयर XY R में है तो ऑर्डर्ड पेयर XY भी किसमें होगा? R में, by the definition of symmetric relation, because R is symmetric. So this is equation number 3 and this is equation number 4. But please wait for 2 minutes if you want to ask something from 3 and 4. But we will get ordered pair XY belongs to R inverse, but we proved that ordered pair XY belongs to R. So from 3 and 4, R inverse is a subset of R. Let it be equation number A, let it be equation number B. From A and B, R is a subset of R inverse. R inverse is a subset of R. We get R is equals to R inverse. Conversely, let R is equals to R inverse. अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? To prove R is symmetric. To prove R is symmetric, तो symmetric proof करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे? Let ordered pair XY belongs to R. तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर XY रिलेशन R के अंदर है तो ऑर्डर्ड पेयर YX भी किसमें होना चाहिए? रिलेशन R के अंदर. नाउ ऑर्डर्ड पेयर XY belongs to relation R implies that ordered pair XY belongs to R inverse. क्योंकि हमें यहाँ पे ये कंडीशन गिवन है that R is equals to R inverse. So if ordered pair XY belongs to R, then ordered pair XY belongs to R inverse. Q because R is equals to R inverse. Implies that YX belongs to R. ये कैसे आ गया? By the definition of inverse relation. तो हमने ordered pair XY किसमें लिया था? R में. हमारे पास ordered pair YX किसमें आ गया? R में. तो from 5 and 6 we get R is symmetric. यही प्रूव करना था हमने कि अगर ऑर्डर्ड पेयर XY है R में तो ऑर्डर्ड पेयर YX भी किसमें होना चाहिए? R के अंदर. तो हमारे पास ये टर्म प्रूव होगी. तो R हमारे पास क्या बन गया? सिमेट्रिक. Next question is consider the set capital Z of integers. Consider the set capital Z of integers and an integer m greater than 1 and an integer m greater than 1. We say that X is congruent to Y modulo M. X is congruent to Y modulo M, written as X congruent, this is the sign of congruence. X is congruent to Y, modulo M is written as like this, mod. तो लिखने का तरीका ये है, बोलने का तरीका ये, ठीक है? X is congruent to Y mod M. If X minus Y is divisible by M or M divides X minus Y. लिखने का तरीका ये है, बोलने का तरीका ये.
x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय m। तो m डिवाइड कर रहा है x माइनस वाई को, इसको उल्टा नहीं लेना कि x माइनस वाई m को डिवाइड कर रहा है, m इज डिवाइडिंग x माइनस वाई, x माइनस वाई जो है वो m के साथ डिविजिबल है, ठीक है, m डिवाइड्स x माइनस वाई। और x minus y is equals to k into m, or x minus y is equals to k into m for some integer k, for some integer k, show that आगे ये वाला साइन डालोगे आप, show that these three lines show that this is an equivalence relation on Z. Show that these three lines is an equivalence relation on Z. I hope you all remember the definition of equivalence relation. Equivalence relation means reflexive, symmetric and transitive. ठीक है, अगर ये तीन डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इधर वाली साइड पे मैं जितना काम करूंगी ये आप लोगों ने लिखना नहीं है, इसको सिर्फ समझना है। इधर जो काम किया जाएगा सिर्फ आप लोग वही लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, वी राइट डाउन दैट ऑर्डर्ड पेयर x x बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप लोग को लिखने का तरीका भी बताया था मैंने। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, इफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे रिलेशन की जगह पे ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, हमें इस कॉन्ग्रुएंस के साइन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इफ वन एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे यहाँ पे, इफ x is congruent to x mod m then the relation is reflexive। ये हमें प्रूव करना है यहाँ से, ठीक है। समझ लो, पूछना होगा तो हैंड रेज कर देना। The definition of reflexive relation is if an element is related to itself then the relation is said to be reflexive. Now in this relation we are having this sign, this congruent sign. So the relation will be reflexive if an element is related to itself, और mod m साथ में राइट हैंड साइड पे आएगा, ये congruence की डेफिनेशन। तो अगर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो तो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो हमें यहाँ पे ये चीज प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो, m डिवाइड्स x माइनस y का मतलब है कि m जो है वो x माइनस y को डिवाइड कर, अगर m x माइनस y को डिवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर। There will be some quotient and this quotient is denoted by k such that we get again x minus y and remainder is equals to 0। इसका ये मतलब है m divides x minus y, मतलब m x minus y को डिवाइड कर रहा है, तो इस x minus y के लिए कुछ ना कुछ quotient आएगा हमारे पास such that ये चीज पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाए और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, देखो we can write m divides x minus x, 2 can divide 0, 2 into 0 is equals to 0 and remainder is 0 and x minus x क्या है, हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स के सेट पे काम कर रहे हैं, तो x minus x अगर आप करोगे it will be equals to 0, ठीक है। I hope ये क्लियर है आपको। Since m divides x minus x, now comparing this thing with this relationship, m divides x minus x, now again we are having if x is congruent to y mod m, अगर ये चीज गिवन है तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, अगर ये चीज गिवन है तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। if x is congruent to y mod m then it means that m divides x minus y। if we are having m divides x minus y then we can write x is congruent to y mod m। तो ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग्स हैं, अगर ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं, ये गिवन है तो ये लिख सकते हैं।
Now comparing this relationship with this, using this we are going to write this. ये कैसे लिखा गया है? X is congruent to y mod n. हमारा relationship यहाँ पे क्या है? Implies that X is congruent to X mod n. तो यही हमें प्रूव करना था. Therefore relation is reflexive. Therefore relation is reflexive. After that, number 2. For symmetric relation, symmetric relation में हम लोग क्या कहते हैं? If ordered pair x y belongs to relation R, then ordered pair y x must belong to relation R. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. If x is related to y, then y must be related to x. ऐसे लिख सकते हैं. अब यहाँ पे देखो हमारे पास रिलेशन की जगह पे ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है. तो if one element is related to some other element, अगर x y के साथ related है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है इसलिए there will be mod n on the right hand side. ठीक है. Then what we want to prove? We want to prove that this element is also related to this element, that is y is congruent to x mod n. हमें ये चीज prove करनी. If we are having x is congruent to y mod n, then y must be congruent to x mod n. So for this, consider this was number 1. Number 2, let x is congruent to y mod n. Again comparing this relation with this, x is congruent to y mod n. If we are having x is congruent to y mod n, then we can write m divides x minus y. So we can write m divides x minus y. अगर m x minus y को divide कर रहा है, तो there will be some quotient k. Let that quotient be k. Implies that x minus y is equals to k into m. ऐसे लिखते हैं ना? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. तो यही चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं. Dividend, that is x minus y, is equals to divisor, that is n, into some quotient, that is k, plus remainder, that is 0. हम लोग यही चीज लिख रहे हैं. x minus y is equals to k into n. Can we write y minus x, or we can say implies that minus of x minus y is equals to k into n. ठीक है. माइनस का साइन कॉमन निकाल के यहाँ से बाहर और कुछ नहीं किया. Implies that x minus y is equals to minus k into m. If we say that 4 is divisible by 2, ठीक है, 2 into 2 is equals to 4, such that remainder is equals to 0. Then अगर हमें -4 को डिवाइड करना है, तो 2 into -2 is -4 and remainder is 0. तो अगर 2 इंटीजर है तो -2 भी तो इंटीजर है हमारे पास यहाँ पे. तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं. अगर k इंटीजर है तो -k is also an integer. तो अगर -2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम वापस लिख सकते हैं कि m divides x minus y again. Wait a minute. It will be माइनस का साइन कॉमन निकाला है अंदर से. It will be y minus x. So y minus x is equals to minus k into m. It will be m divides y minus x. तो m ने किसको डिवाइड किया? y minus x को. अगेन इस रिलेशनशिप को हम लोग इस कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे. m divides y minus x. अगर m x minus y को डिवाइड करता है, then we are having x is congruent to y mod n. तो यहाँ पे m किसको डिवाइड कर रहा है? y minus x को. It means that y is congruent to x mod m. Therefore, relation is symmetric. Therefore, relation is symmetric. After that, third part, relation transitive prove करना है. Transitive की definition: if ordered pair x y belongs to relation R and ordered pair y z belongs to relation R, then ordered pair x z must belong to relation R.
or you can say that if x is related to y and y is related to z, then x must be related to z. हमें ये चीज प्रूव करनी है। अगेन हम इसको अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करेंगे। रिलेशन की जगह पे कॉन्ग्रुएंस का साइन है, इफ x is congruent to y mod m and y is congruent to z mod m, then x must be congruent to z mod m। हमें ये चीज प्रूव करनी है, x का रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए, z के साथ। तो यही प्रूव करेंगे यहाँ पे। लेट x is congruent to y mod m and y is congruent to z mod m। तो अगर x congruent है y mod m के, हम क्या लिख सकते हैं, m divides x minus y, y congruent है z mod m के, it means that m divides y minus z। Now m is dividing x minus y, it means that x minus y is equals to k1 into m. Similarly, m is dividing y minus z, that is y minus z is equals to k2 into m. Adding these two equations, x minus y plus y minus z is equals to k1m plus k2m, plus y and minus y will be cancelled out. X minus z is equals to k1 plus k2m. So if k1 and k2 are integers, then k1 plus k2 is also an integer. From this we can say that m divides x minus z implies that x is congruent to z mod m. Therefore, relation is transitive. So the relation satisfies all the properties of reflexive, symmetric and transitive. Therefore, the given relation is an equivalence relation. Important question for 10 marks. Next is, let A be the set of integers, capital A. Next article है again हमारे पास. Let A be the set of integers and let ये sign दिया हुआ हमें again एक, and let this be the relation on and let this be the relation on A cross A defined by AB related to CD, defined by AB related to CD, if and only if A plus B equals to B plus C. If and only if A plus B equals to B plus C. Prove that the sign again. Prove that this is an equivalence relation. Prove that this is an equivalence relation. So we are going to prove this again an equivalence relation. For equivalence relation, we have to prove three properties, that is reflexive, symmetric and transitive. Again, number one, for reflexive, by the definition of reflexive relation, if an element is related to itself, then the relation is said to be reflexive. Now, in this case, in the place of reflexive, we are having this sign, and in the place of this element, we are having this ordered pair. So, what we will prove that if ordered pair xy is related to, अगर एक element अपने ही element के साथ related है, if the element is related to itself, only then the relation is said to be reflexive. So now the element is ordered pair xy. So what we will prove that if ordered pair xy belongs to ordered pair xy, then the relation is reflexive. Okay? Now this is the set of integers. We can say that a plus b equals to b plus a. चाहे a plus b लिखो या b plus a लिखो, 1 plus 2 लिखो या 2 plus 1 लिखो, रिजल्ट तो सेम ही आएगा हमारे पास. So we know that a plus b equals to b plus a. Now comparing this condition with this given condition. Again, if and only if means if this condition is given, we can write this relationship, and if this condition is given, we can write this relationship. Now, considering comparing this condition with this.
वी हैव टू राइट दिस कंडीशन। तो ये कंडीशन कैसे बनी है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए कहां से आया? लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है? ए, कॉमा सेकेंड एलिमेंट बी कहां से आया? राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट। हमारे पास राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? आगे बी। आफ्टर दैट ये रिलेशनशिप का साइन है हमारे पास। Then we are having C. C कहां से आया? राइट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट। हमारे पास राइट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट क्या है? A. Then D. D कैसे आया? लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट क्या है? D. यही चीज प्रूव करनी थी। If one element is related to itself, therefore relation is reflexive. Therefore relation is reflexive. Number two, for symmetric, what we say that if x is related to y, then y must be related to x. Now we are having relation की जगह पे we are having this sign, element की जगह पे we are having this ordered pair. If one element is related to some other element, that is, if ordered pair xy is related to, let us suppose pq, ठीक है? If one element is related to some second element, then the relation will be symmetric if उलट जाए ये relation, y is related to x, मतलब if pq is related to xy, अगर ये बन जाए हमारे पास तो हम क्या कहेंगे? relation is symmetric. So let ordered pair AB is related to ordered pair CD if one element is related to some other element. Again इस रिलेशनशिप को आप इसके साथ कंपेयर करो। अगर ये कंडीशन है, इसकी जगह पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। We can write this. अब ये सेम ही था ABCD, AB is related to CD, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Implies that A plus B equals to B plus, लिख सकते हैं। Implies that now A plus B can be written as B plus A and B plus C can be written as C plus B. After that, we can change the both sides. C plus B equals to D plus C. ठीक है? Implies that. अब जो ये condition बनी है, comparing this condition with again this condition. अब ये condition आ गई है हमारे पास, इसको यूज करके we have to make left hand side. अब left hand side कैसे बनी है? A, that is first element of left hand side. First element of left hand side is C. Then B, first element of right hand side. First element of right hand side is D. After that, this sign. Then we are having C, second element of right hand side. Second element of right hand side is A. D, second element of left hand side. Second element of left hand side is B. तो ये प्रूव हो गया। A भी रिलेटेड था CD के साथ, तो हमने प्रूव कर दिया CD is related to AB. Therefore, relation is symmetric. Therefore, relation is symmetric. ठीक है? Third condition, transitive. Transitive की स्टेटमेंट क्या कहती है? If x is related to y and y is related to z, then ordered pair x z related to r, that is x is related to z. This is the condition of transitive. According to our question, in the place of r we are having this sign. If ordered pair AB is related to some second element, if first element is related to some second element, first element is AB and second element is CD, and now this second element is CD. Related की जगह पे ये वाला sign है, is related to some third element, let it be EF. Then what we want to prove, that first element is related to third element. We have first element as AB. In the sign of relation, we are having this sign, and third element is EF. We want to prove this. ठीक है? अब इसको prove करने के लिए again let consider this relationship.
Let ordered pair AB is related to ordered pair CD and ordered pair CD is related to ordered pair E. ठीक है, अब ordered pair AB is related to ordered pair CD, तो क्या लिख सकते हैं हम? A plus D equals to B plus C. And similarly ordered pair CD is related to ordered pair EF. इसको इसके साथ कंपेयर करो, हमें ये चीज लिखनी है. ये चीज कैसे है? A मतलब लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? C प्लस D कहां से आया? राइट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट, हमारे पास राइट हैंड साइड का सेकंड एलिमेंट क्या है? F इक्वल्स टू B कहां से आया? लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट, वी आर हैविंग D. C राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट एंड वी आर हैविंग E. सबट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशंस को, A plus B ऐड करो दोनों इक्वेशंस को, प्लस C प्लस F इक्वल्स टू B प्लस C प्लस D प्लस E. दो इक्वेशंस है, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड. implies that this C and this C will cancel out, this D and this D will be cancelled out. We get A plus F is equals to B plus E. अगेन जो ये कंडीशन बनी है इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसे यूज करके हमें ये रिलेशनशिप बनाना है. ये रिलेशनशिप कैसे बनेगा? implies that A B is related to E F. I hope ये आपको बहुत क्लियर है हमने कैसे बनाया है. Therefore, the relation is transitive. So the given relation satisfies the properties of reflexive, symmetric, and transitive. Therefore, given relation is an equivalence relation.